डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे और लुइस पास्टर का लेसन सुन रहे होंगे लेक्चर, और डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग अलहदा से लिख रहे होंगे और टेक्स्ट की रीडिंग भी कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट आपके सामने है, आप अपनी बुक भी देख सकते हैं। टू रिटर्न टू पास्टर, पास्टर की तरफ वापस आते हैं, बात पास्टर की करते हैं। The achievement by which he is best known to the man in the street, that is his work on disease, was led up to by an investigation into which he was almost forced by the French government. कि वो कारनामा, वो तहकीक जिसकी वजह से पास्टर को एक आम आदमी भी अच्छी तरह जानता है, ये एक बीमारी पर तहकीक है जो उसको एक और तहकीक पर ले आई, जिसके लिए फ्रांसीसी हुकूमत ने उसे तकरीबन मजबूर कर दिया था। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ मिस्टीरियस एपिडेमिक ऑफ सिल्कवर्म डिजीज which for 15 or 16 years had been devastating the silk industry in the south of France. ये एक ऐसी तहकीक थी जो रेशम के कीड़ों की बीमारी पर करनी थी, जो एक वबाई शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और 15-16 साल से फ्रांस के जनूब में रेशम की सनत को तबाह किए जा रही थी। Now, the keeping of silkworms was one of the chief home industries of the peasantry of that part of France. उस वक़्त फ्रांस के उस हिस्से में किसान तबका उनकी घरेलू सनतों में से एक बड़ी सनत रेशम के कीड़े पालना था। Practically every family set aside the best room in the house for the rearing and tending of silkworms. अमली तौर पर हर खानदान घर का सबसे अच्छा कमरा रेशम के कीड़ों के पालने और देखभाल करने के लिए मुख्तस कर देता था। The women got up even during the night to supply the worms with fresh mulberry leaves. ख़वातीन रात को उठकर ताज़ा शहतूत के पत्ते मुहैया करने के लिए उनको संभालती रेशम के कीड़ों को, and to see, और ये देखना that the temperature of the room was just right, कि कमरे का दर्जा हरारत बिल्कुल ठीक है। एंड इन दैट रीजन, और उस इलाका में, द कॉमन ग्रीटिंग ऑन मीटिंग अ फ्रेंड इज सैड टू बी नॉट हाउ डू यू डू, बट हाउ आर यूर सिल्कवर्म्स डूइंग। उस इलाके में एक दोस्त का दूसरे दोस्त को मिलने पर आम मामूल का सलाम ये नहीं था कि क्या हाल है, बल्कि पूछा जाता था कि आपके रेशम के कीड़े कैसे हैं, यानी उनके जो कारोबार था उसके बारे में पूछा जाता था। Until 1849, 1849 तक the industry had flourished consistently, बड़े तवातुर से ये सनत फली फूली। But in 1849, लेकिन 1849 में the moths were attacked by disease, कीड़ों पर बीमारी का हमला हो गया। It was thought at first, पहले ये सोचा गया that the eggs were at fault, कि शायद अंडे खराब थे, and fresh ones were brought from other countries, और ताज़ा अंडे दूसरे ममालिक से मंगवाए गए, दरामद किए गए। And for one season, और एक मौसम के लिए, this cured the disease, इस बात ने यानी दरामद ने, अंडों की दरामद ने बीमारी का इलाज कर दिया। But it reappeared in the first generation of descendant of these imported worms. इनकी जो अगली पौध थी उसमें फिर ये बीमारी निकल आई, and so the inhabitants were driven to import fresh eggs every year. जो उस इलाके के बासी थे वो इस बात पे मजबूर हो गए कि हर साल नए अंडे दरामद करें। Soon, however, the disease spread to neighboring countries until Japan was the only silk producing country free from the disease. ऐसा हुआ कि साथ के ममालिक में भी ये बीमारी फैल गई, यहाँ तक कि जापान वो वाहिद मुल्क रह गया जो
بیماری سے پاک ریشم پیدا کرنے والا تھا. This reduced the silk growers to despair. اس سے ریشم پیدا کرنے والے لوگوں میں مایوسی پھیل گئی. Thousands of families were faced with ruin. ہزاروں خاندانوں کو تباہی کا سامنا تھا. And things were so serious. اور حالات اتنے سنجیدہ ہو گئے that in 1865 کہ 1865 میں the government asked Pasteur to investigate the disease. گورنمنٹ نے پاسٹر سے کہا کہ وہ اس بیماری کا اس کے اوپر تحقیق کرے. At first he refused. پہلے اس نے انکار کیا. On the ground اس بات پر that he was a chemist کہ وہ ایک کیمیادان ہے, not a naturalist, اور ماہر حیوانات و نباتات نہیں ہے. And had never touched the silkworm in his life. اور اپنی زندگی میں کبھی اس نے ریشم کے کیڑے کو ٹچ تک نہیں کیا. But he pleaded ignorance in vain. لیکن اس نے اپنی لا علمی کا جو عذر پیش کیا وہ بے سود تھا. So much the better, replied Mr. Dumas, who bore the message from the government. You will only have the idea which come to you from your own observation. مسٹر ایم ڈیومس جو گورنمنٹ کا پیغام لایا تھا حکومت کا, اس نے کہا کہ تم صرف اسی بات کے اوپر کام کرتے ہو جو تمہارے مشاہدے سے تمہارے ذہن میں آتی ہے. دس یعنی یہ بات, this coupled with the sympathy of the people of the devastated region overcame his reluctance. اس بندے کی اس بات نے اور جو پاسٹر کے اپنے اندر ہمدردی تھی ان لوگوں کے لیے, تباہ شدہ لوگوں کے لیے, یہ دونوں مل کر اس کی اندر جو ہچکچاہٹ تھی ان پر غالب آ گئی. اینڈ ہی سیٹ آؤٹ فار الیاس, a town in the silk district. سلک ڈسٹرکٹ میں مقام الائس, اس کی طرف وہ روانہ ہو گیا, یعنی تحقیق کے لیے وہ تیار ہو گیا. Now earlier observers had noted, پہلے مشاہدہ کرنے والوں نے یہ بات نوٹ کی تھی, had noted microscopic grains or corpuscles in the bodies of the diseased worms, کہ جو بیمار جو کیڑے تھے ان کے اجسام میں خردبینی اجسام یا ذرات, یہ نوٹ کیے تھے پہلے کے مشاہدہ کرنے والوں نے. But nobody had succeeded in finding a remedy. کوئی علاج دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا. Until Pasteur suggested, یہاں تک کہ پاسٹر نے تجویز دی, collecting the eggs laid by each moth separately and only keeping those derived from healthy parents. کہ کیڑوں سے دیے گئے انڈے سب کو علیحدہ علیحدہ کر کے, یعنی بیمار اور ان کو علیحدہ کر کے رکھا جائے, اور صرف جو صحت مند والدین سے انڈے حاصل ہوئے ہیں ان کو رکھا جائے. That's all. We will continue. Thank you.